आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक्स का एक जनरल इक्वेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इक्वल्स टू 0। ये जो x का जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में बस एक बात ध्यान देने की है कि अगर a b c अगर ये तीनों वैल्यू 0 हो गए, a b c अगर ये तीनों वैल्यू 0 हो गए तो ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इक्वेशन नहीं रहता, ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि x के हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। अदरवाइज अगर a की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रिलेटेड अब कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी x के सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। x के जितने ऑर्डर का इक्वेशन होता है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी उतने ही होते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे और सपोज दैट उन दो सॉल्यूशंस को हम अल्फा और बीटा ले लेते हैं तो इसके दो रूट्स हैं। सॉल्यूशंस का मतलब रूट्स वैसे पॉइंट जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो इसके दो रूट्स होंगे। अब ये अल्फा और बीटा कैसे और कब कैसे एग्जिस्ट करेंगे ये हम लोगों को देखना है। तो ये अल्फा बीटा एग्जिस्ट करने के लिए पहले हम एक टर्म को जानते हैं जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो इनके कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो वैल्यू है ये b और ये a और c, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है इसी के ऊपर रूट का एग्जिस्ट करना या नहीं करना डिपेंड करता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो d वैल्यू है इस पे तीन केस आएंगे। अगर d की वैल्यू, फर्स्ट केस जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, दो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट और अनइक्वल रूट, रियल रूट। कहने का क्या मतलब हुआ, जब भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है ये जब ग्रेटर देन 0 है तो इसकी जो रूट्स हैं वो दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब d ग्रेटर देन 0 यानी अल्फा एंड बीटा रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दो अलग अलग रूट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। वही दूसरा केस है जब d की वैल्यू ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। तो जब ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो अल्फा और बीटा जो है वो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी जो रूट है वो रियल तो रहेगा पर इक्वल हो जाएंगे, दोनों रूट आपस में इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट केस है जब d की वैल्यू लेस देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब लेस देन 0 हो जाएगी तो इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके रूट तो एग्जिस्ट करेंगे पर वो इमेजिनरी होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद हम लोग देख सकते हैं। इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी अल्फा एंड बीटा ये जो है इसका कोई नो रियल रूट्स होंगे, इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ जनरल आइडिया हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में दो रूट है अल्फा और बीटा तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें तीन केसेज आ सकते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और जब d की वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इसमें एक दो चीजें और देखेंगे। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली है क्या, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत अगर कोऑर्डिनेट का आइडिया हो तो ये एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला का। अगर हम इसी चीज को y में ले लें, इस एक्सप्रेशन को y के टर्म में ले लें, पॉज करो एक मिनट, पाउज ना हो चलते रहेगा कोई नहीं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम y मान लें, इस एक्सप्रेशन को y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में ले लेते हैं तो हम लोग को ये दिखेगा कि ये एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला
जिसका एक्सिस वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो अगर हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली समझने जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर y = ax² + bx + c है तो ये एक जनरल फॉर्म में पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि वो पैराबोला किस तरह का बनेगा। तो पैराबोला बनने के पीछे यहाँ पे दो केसेस होंगे। यहाँ पे मेनली दो केसेस होंगे। दो केसेस क्या होंगे? जब पहला केस होगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये जो x² का कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इस केस में जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग बनेगा। जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड फेसिंग बनेगा। कहने का क्या मतलब हुआ? अब इस केस में जो पैराबोला है वो तीन तरह से बन सकता है। d की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो, d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो या d की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इस केस में अब इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और रूट्स होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे उसकी वैल्यू 0 होगी। यानी ये जो पैराबोला बनेगा उसकी दो जगह वैल्यू 0 होगी, यानी वो दो जगह x एक्सिस को करेक्ट करेगा। वैल्यू 0 होने का क्या मतलब हुआ? अगर ये x और y एक्सिस है तो y वैल्यू 0 होने का मतलब हुआ कि वो कहीं ना कहीं x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये जो पैराबोला बनेगा इसका जो जनरल शेप बनेगा वो बनेगा, हम लोग y एक्सिस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको थोड़ा भिंगा देते y एक्सिस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये जो इस केस में जो पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा कि वो x एक्सिस को दो जगह कट करते हुए जाएगा। इस केस में वो दो जगह कट करते हुए जाएगा। वही केस अगर हो कि d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 हो, उस केस में क्या होगा कि वो जो पैराबोला है वो बस x एक्सिस को एक जगह टच करते हुए जाएगा। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो उसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब होगा कि वो जो पैराबोला है वो पूरा का पूरा कभी x एक्सिस को नहीं छुएगा और पूरा का पूरा x एक्सिस से ऊपर लाई करेगा। तो हम लोगों ने तीन केस देखा। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो तीन केस हो सकते हैं, d की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ग्राफ पैराबोला का। सिमिलरली जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, जब ये जो ax² + bx + c में a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बस इसी तरह के तीन केस रहेंगे, लेकिन बस एक बेसिक डिफरेंस आएगा कि जो पैराबोला का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड फेसिंग हो जाएगा। अभी तक पैराबोला अपवर्ड फेसिंग था, अब वो पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि when a is less than 0, when a is less than 0, then there are three cases. That first case is d is greater than 0. In this case, the shape of parabola will be downward facing and it will be cutting the x-axis at 2 points as it has got two roots. Then the shape of the parabola, general shape of the parabola will be in this shape. Second case will be there when d is equals to 0. This means the roots are identical. In this case, the parabola will be downward facing but will be touching x-axis at only one point. The parabola will be touching x-axis at only one point. And in the third and last case, when d will be less than 0, in this case, the parabola will totally remain in the downward side of the x-axis. It will not even touch the x-axis or even cut it. The parabola will be totally in the downward side of the x-axis. So we can see that there are basically two cases. That first case is when a is greater than 0, then the parabola is upward facing. Second case is when a is less than 0, the parabola is downward facing. This graph is very useful by solving the inequalities of the quadratic equation. When in this case, let's take this case. In this case, if the graph is on the upper side of the x-axis, then we can say the y value is positive. And if the graph is on the downward side of the
x-axis, we can say the y-axis is y value is negative. So we can solve any quadratic inequation using this graph. So this is the basic idea of quadratic equation and the graphs of quadratic equation. Now we will solve one or two problems and see how the problems are approached in this using this method. Let's take one question. There is a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. It has got two roots, two real roots, alpha and beta. If there is a quadratic equation such that it has got two real roots, alpha and beta, and k is a number such that k lies between alpha and beta. K is a number such that k lies between alpha and beta. Then we have to take the appropriate answer. We have to choose an appropriate answer out of these four options. The options are: first is ak square plus bk plus c is greater than 0. Second option is ak square plus bk plus c is less than 0. Third option is a square k square plus abk plus ac greater than 0. And fourth option is a square k square plus abk plus ac is less than 0. I am repeating the question once again. The question is ax square plus bx plus c equals to 0 is a quadratic equation such that it has got two real roots alpha and beta. Now k is a number such that k lies between alpha and beta. Now we have to pick the correct alternative out of these four. So how can we approach this problem? There are many ways, but if we know the graphical approach of the quadratic equation, then this problem is very easy for us. See how it can be solved. As we know that this quadratic equation has got two real and distinct roots. This means its d value is greater than 0, its discriminant value is greater than 0, and the graph of this quadratic equation, there are only two possibilities for the graph of this quadratic equation. One is when a is greater than 0, then the graph of this quadratic equation will be something like this. That it would be crossing the x-axis for 2 times, and some part of it would be down in the downward side of the x-axis and some on the upper side of the x-axis. Just a sec. Let's continue. So the first possibility is when a is greater than 0, then the graph of the parabola, the graph of this quadratic equation will be something like this. And the second possibility is when a is less than 0, then the graph of this parabola of this quadratic equation will be something like this. And it has got two real and distinct roots, so it would be cutting x-axis at 2 points, such that this point is alpha, this point is beta, or this point is alpha and this point is beta. Now according to the question, k is a number such that its value lies between alpha and beta. Now we can see in the option, we can see the options are values of options contain the value of the function at the point k. Now let's see what is the value of the function at the point k. If k is a number such that it lies between alpha and beta, then k will be something like here in either of these points, or k will be something like here. Now let's see in this case, when k is a point in between alpha and beta, then the value of the function, the value of the quadratic equation at point k is something like this. And these points are below the x-axis. This means fk is less than 0. This means fk is less than 0. The value of the function at the point
point K will always be less than 0 if it lies between alpha and beta. This means that AK square plus BK plus C is less than 0 in this case. Similarly, in this case, if the K lies between alpha and beta, then the value at K, the value of function at K, Fk, as visible from the figure, is value at Fk, the value at Fk is greater than 0 as it is on the upper side of the x-axis as it is visible from the graph. Then the Fk will be greater than 0 in this case. This means that Ak square plus Bk plus C is greater than 0. Now, in both the cases, if we multiply the value of the function at K, Fk, with A, then as we know that if we multiply a positive number with a negative number, the multiple is negative. And again in this case, if we multiply a negative number and a positive number, the multiple, the result will be a negative number. So in both the cases, if we multiply A with Fk, then the result would be less than 0. This implies that A into Ak square plus Bk plus C will be less than 0. This means that A square K square plus ABK plus AC will be less than 0. So, as we can see, the fourth option will be the correct alternative. So, if we take this question and we do not know the concept of the graph, the solving of the problem will be very tough. But if we know the concept of the graph, then the solving of this question is very easy.